Assalamualaikum students, and today our topic is project management. And in project management, we'll first start from project knowledge areas, which are 10 in number. So first, I want to define what is the knowledge area and why it is necessary. In knowledge areas, basically we use knowledge areas to organize project management processes by what needs to be done to manage the project successfully. These knowledge areas are like a recipe for successful implementation of a project. These knowledge areas describe processes and direct project managers, and these knowledge areas direct project managers to effectively plan, manage, and finalize all aspects of the project. So now we see the names of the knowledge area. The first one is the production management. The second one is the project scope management. The third one is the project schedule management. The fourth is project cost management. Fifth is the project quality management. Sixth is the project resource management. Seventh is the project communication management. Eighth is project risk management. Ninth is project procurement management. And the last one, 10th, is project stakeholder management. So I think it seems to be remembered a little bit tough. For this, there is a one phrase which must help you to remember it, and that is I saw 6 cars quickly hit carols where passengers side. I for integrations, S for project scope management, S for schedule, C for cost for quality, R for resource management, and C for communication, R for risk, P for procurement, and S for stakeholder. But here again, one thing we must remember that cost must become before communication. The cost must become before communication. So these are the 10 knowledge areas. And now these knowledge areas have different processes, and these processes are 49 processes, which also fall in 5 project process groups, and those process groups are in 5 in number. The first one is the initiating process group. The second one is the planning process group. The third one is the executing process group. The fourth one is the monitoring and controlling process group. And the last one is the closing process group. So if we distribute these 49 knowledge areas in terms of these process groups, then in the first process, that is the initiating process group, there are the 2 processes. The second, in the planning process group, total there will be 24 processes. In executing process group, there will be 10 processes. In monitoring and controlling process group, there will be 12 processes. And then the last is the closing, close the phase or close the project. Only 1 process group. So this is the distribution if we done it accordingly through the process groups. Yes, there is another distribution also exists, which if we done through in terms of knowledge area, and that can be remembered in terms of number. And I explained that 766 436 3734. So we can remember this number like that: 766 436 3734. Mean 7 processes in project migration management, 6 processes in scope, 6 in schedule, project cost management has 4, project quality management has 3, project resource management has 6, project communication management has 3, project risk management has 7, project procurement management has 3, and project stakeholder management has 4. So if we add them, these are the 49, these will be the 49 processes. And same like that, 2, 24, 10, 12, and 1, sorry. 2, 24, 10, 12, 1, that will be 49 in terms of process groups, 5 process groups. So in today's lecture, I tried to be adjust 24 process groups in terms of knowledge areas as well as in terms of process groups. I mean, we will see it. हम इसे देखेंगे कि ये दोनों साइड पैरेलल में और कॉलम वाइज भी डिस्कस करते हैं.
लाइक हम देखते हैं कि जी जो फर्स्ट इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप है इसमें जस्ट दो प्रोसेसेस एडजस्ट होते हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा फ्रेजर डू इट मीन डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर and identify it. I for identify stakeholders. So two processes. The first is one develop project charter. It comes in the project integration management and identify stakeholder in the last project stakeholder management. Identify stakeholder. So this initiating process group processes has completed. So two processes were adjusted. And in the last, as I told, the closing process group, only one process that is close the project or phase. So we adjusted two processes in two process groups. One is in initiating process group and other in the closing process group. Now, remaining processes for adjustment of remaining, all these remaining processes, of course, will be adjusted in these three processes: planning process group, executing process group, monitoring and controlling process groups. Mean we need to adjust 24 processes in planning process group, 10 in executing process group, and 12 in monitoring and controlling process groups. So for this आसान वर्डिंग में अगर कहें तो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोसेसेस एडजस्ट होने हैं। प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रोसेस ग्रुप्स आएंगे। उसके लिए बेसिकली प्लानिंग में 24 प्रोसेस ग्रुप एडजस्ट होने हैं 10 नॉलेज एरियाज के अंदर। एंड अगर हम इस साइड से देखें दिस इज द नंबर। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन के अलावा जितने भी नॉलेज एरियाज हैं मीन प्लानिंग का रोल इनमें है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट इन प्लान्स को मैनेजमेंट, then plan schedule management, plan cost management, plan quality management, plan resource management, plan communication management, plan risk management, plan procurement management, plan stakeholder management. So these 9 processes are adjusted in 9 knowledge areas except integration. Clear? So students ये 9 हमने इसमें मजीद एडजस्ट कर दिए। तो अब टोटल हमने 11 प्रोसेसर एडजस्ट कर दिए, सॉरी 13 एडजस्ट कर दिए बिकॉज 2 हो गए इनिशिएटिंग ग्रुप में, इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में, एक हो गया क्लोजिंग में 3 और 9 कर दिए अभी तक हमने प्लानिंग में। 3 + 9 इट्स 12 प्रोसेसेस वर एडजस्टेड। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बेसिकली देखिए इसका एक एंगल ये भी है कि हम ये देखें कि ये नॉलेज एरिया कितने प्रोसेस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की तो इंटीग्रेशन तो नाउ विल फाइंड दैट हाउ विल एडजस्ट। हमने 13 एडजस्ट कर दिए थे, उसके बाद बाकी हम करते हैं जी बाकी हम एडजस्ट करें प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में, एग्जीक्यूटिव में और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। अब हम देख रहे हैं कि अगर इस एंगल से देखिए तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट ऐसा नॉलेज एरिया है जो पांचों प्रोसेस में एग्जिस्ट करेगा, 5 के अंदर करेगा। इसके अलावा मीन ये एग्जिस्ट करेगा 5 प्रोसेस ग्रुप में, हर एक में इसके स्टेप्स आएंगे। इनिशिएशन में प्रोसेस आएंगे, प्लानिंग में भी, एग्जीक्यूटिव में, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में, क्लोजिंग में के अंदर भी। जबकि जो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट है उसके 2 के अंदर सिर्फ आएंगे, 2 प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर उसके स्टेप्स आएंगे। सिमिलर स्केड्यूल मैनेजमेंट के भी 2 में आएंगे and if we go to the project cost management इसके भी 2 में आएंगे and after that quality management 3 के अंदर आएंगे, quality management 3 and again project communication management के 3 and project procurement management के 3 आएंगे, ठीक है। और लास्ट वाला प्रोजेक्ट stakeholder management 4। अब इसमें एक या 2 मैं रख किए उसके हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका एक्सप्लेन करेंगे, बट फर्स्ट मैं ये बताता हूं कि अब देखिए अब इसमें 3 नॉलेज एरिया ऐसे हैं जिनमें 3 प्रोसेसेस हैं। उसमें एक क्वालिटी मैनेजमेंट है, एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है और एक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है। देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन इज द जो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट क्वालिटी। तो अब बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की। देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट में 3 है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में 3 है और
प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट तीन है। अब एक एक तो वही है जो प्लानिंग में हमने किया था। एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस ग्रुप में मैनेजमेंट क्वालिटी है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में कंट्रोल क्वालिटी है। तो ये तीन प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए। उसके बाद आ गया जी मतलब प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन के भी तीन प्रोसेसेस हैं, उनमें एक आ गया जी प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वन हो गया। ओके, सेकंड इज द मैनेज कम्युनिकेशन। मैनेज कम्युनिकेशन इज एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप एंड थर्ड वन इज मॉनिटर कम्युनिकेशन। मॉनिटर कम्युनिकेशन इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप। सो तीन स्किल कंप्लीट हो गए। अब थर्ड वन इज द प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। The one is the same plan procurement management. The second is in the executing process group, conduct procurement. Student, here we need to remember the word is procurement should be always conducted. So we must use conduct procurement and control procurement. So these 3 plus 3 plus 3. So we choose first these three because these are these three knowledge areas: project quality management, project communication management, project procurement management has three processes each, and these have all three processes in three process groups: in planning process groups, executing process groups, and monitoring and controlling process groups. And lastly, we explain regarding risk because we have already learned about the risk management. So when we come to the risk plan project risk management have basically seven processes. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की सेवन प्रोसेसेस हैं, जिनमें पांच है प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में। तो उसको क्योंकि पांच है तो इसलिए इस साइड में नोट बनाया है, देखिएगा। Plan risk management is the first. Then identify risk. After identification, what is that? That is the perform qualitative risk analysis. Then perform quantitative risk analysis. And the fifth one is the plan risk responses. So these are the five processes in planning process group regarding the project risk management knowledge area. The remaining two, one is in the executing process group, that is the implement risk response. After implementing, the next one will be the monitor risk, that is sorry, monitor risk that includes in monitoring and controlling process group. So these will be the seven processes in risk management. So now we adjusted those knowledge areas which have three processes groups of each. After three, we will move to those knowledge areas which have two processes each. And which are those? Project cost management has two processes. Project schedule management has two. Project scope management has two. Project scope management has two processes. One is the same one, mean plan schedule management. Other one is the control schedule management. Sorry, control schedule. Control schedule. So these are the two respective according to the project schedule management. So today we discuss 29 processes and we try to adjust in a simple way, and remaining 20 processes adjustment we will done in the next part. Thank you.